Next video about Boolean and other data type. So I will explain you first what is Boolean. In different programming language, we have different data type to store different type of data. Some of data use data type that is your integer, string, float, and Boolean. The Boolean data type is used to store data only two type of value, that is your true and false. These value is not a case sensitive, but it depends on what programming language you are using. The Boolean value is a branch of your mathematical called Boolean algebra. The name Boolean comes the branch of mathematician called Boolean algebra, named after George Boole the mathematician. What is Boolean data type? Boolean data type is basically is used to store your logical value, that is your true and false. It takes only one byte of data to store logic value. Here, true means 1 and false means 0. The Boolean data type, any value other than 0 is considered as true. 0 के लगा, suppose if your value is other than 0, so your value will be true. He is used to store your data 2 to 8 bytes, depends on which type of machine you are using. Next, Python data type. Here we have three type of data. Basically, first Boolean data type, next text, and third one is your number data type. We have already explained your text and number data type. Text means string data types and number means integer floats. And discuss Boolean data type. Next, logic and Boolean operator. Here we have three logical operator. First one AND operator, AND sign. Second OR operator. Third NOT operator. So let's discuss it one by one. Your first logic operator is your AND operator. This is your AND operator. जो आपका AND operator है, ये आपको वैल्यू ट्रू देगा उस केस में जब इसकी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी. सपोज आपकी फर्स्ट कंडीशन एंड दैट इज योर सेकंड कंडीशन इज ट्रू, so result will be true. But suppose first condition is true and second condition is false, so output will be false. Third, first condition false, second condition true, output will be false. Fourth, both conditions false, so output will be false. Depends on which type of your condition. But main operation of your AND operator, when your both condition will true, so output will be true. Otherwise, your result will be false. This is your AND operator. So, I will explain you with the help of this program Visual Studio. So first variable is 23. Second variable is name defined true value. Here we have defined is name variable as a true value. So condition अगर आपकी एज 18 से ग्रेटर है एंड उसका जो नेम है, जो हमारी वैल्यू है वो ट्रू है, हमने बोथ कंडीशन दी है, तो दैट इज योर एलिजिबल. और ऑपरेटर साइन इज दिस. सो व्हाट इज और ऑपरेटर? और ऑपरेटर में अगर सपोज आपकी अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो आपका जो आउटपुट है वो ट्रू होगा. प्रोग्राम हियर वी हैव डिफाइंड अ वेरिएबल num एज अ वैल्यू 7. सो कंडीशन अगर आपकी जो वैल्यू है सपोज एक तो 0 के बराबर होगी या 0 से छोटी होगी, एंड सेकंड कंडीशन अगर आपका जो वैल्यू है वो 20 से ग्रेटर होगी, इट विल बी फॉल्स. सो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज the number is between 0 to 10. आपकी ये वाली लाइन प्रिंट होगी, the number is between. Okay. Operator is not operator, exclamatory sign. This is your not operator in programming language. So इसमें क्या होता है, सपोज आपका अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपको रिजल्ट इसका अपोजिट मिलेगा, मीन्स फॉल्स. अगर आपका जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू, मीन्स अपोजिट चलेगा इसमें. Suppose we have defined a variable is name as a false value. So that means your input is false. So what will be your output? If not,
वी हैव डिफाइंड हियर नॉट। नॉट का मीनिंग है कि जो हमारी जो आउटपुट है उसका अपोजिट दे देगा हमें। अगर हमारा इज नेम फॉल्स है तो हमें वैल्यू देगा ट्रू, तो आपका प्रिंट हो जाएगा प्लीज एक्सेस दिस फीचर। ये वाला आपकी लाइन प्रिंट हो जाएगी, ट्रू वैल्यू देगा आपको अगर आपकी इनपुट फॉल्स है।